Okay, so today's topic is going to be very, very important topic. There is no excuse in Indian economy for this topic. Okay, you can consider it as the heart of economy, or everything which starts with. Okay, so national income and ways of income generation. Okay, so this is going to be our today's topic. Okay, so in today's session we will deal with national income, and tomorrow we will deal with the ways of earning national income, ways of income generation, whatever you say. Okay, so now income means what. Okay, what do you mean by income? Yes, you can participate in giving the definition. What is income? Right there, income is actually any kind of payment for economic activity. That economic activity may be something like you are consuming something, so you are paying for that, so it becomes the income for provider. Or suppose if you are consuming services, then you are paying for it, or you are serving someone, so you are getting payment for it. So any kind of receipt, any kind of receipt which is made in lieu of goods or services provided. Okay, so whatever people want, whatever need is of either good or services. Okay, हमको कुछ भी चाहिए जिंदगी में, तो सिर्फ हमें या तो गुड्स चाहिए तो सर्विस चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए. हमारी जरूरत ही गुड्स और सर्विसेज में सिमटी हुई है, इसके अलावा हमारी कोई ऐसी नीड हो नहीं सकती. और कोई नीड आपने क्रिएट भी किया तो ऑटोमेटिकली टर्न्स इनटू व्हाट गुड्स और सर्विसेज, चाहे कुछ भी कर लो आप. ओके, सो आप टूर पे जा रहे हो, अपने मेडिटेशन क्लास को जा रहे, सर यहाँ कुछ नहीं मिला रही है, लेकिन फिर भी वो आपको सर्विस दे रहे. सही, दैट्स व्हाई that service is, that economic activity is valued as a service. You get the service, you pay for it. You want a car, you're buying good. If you are buying house, you're buying good. If you are having litigation in the court, so the lawyer and the courts are providing you services, you have to pay charges for that, right? So everything you do is economic activity. Okay, and economic activity brings some kind of payment in lieu of it. So it becomes the receipt, and receipt is, you have not supposed to pay it back to anybody else. मैंने कमाया, मेरे को किसी को देना नहीं है, मतलब लायबिलिटी नहीं है. ओके, लायबिलिटी नहीं है. जैसे मैंने अभी आपका क्लास लिया है, त्यामुळे तुम्ही त्याची पेमेंट केलेली आहे, मला कोणाला द्यायचं नाही आहे. ओके, so I don't have any liability to return that money. I don't owe that money to you because I am giving a service and you are paying for it. That's it. It has become a business. So it is economic activity. Okay, so my receipt is my income. So every receipt, okay, आवक हे income असते. So जैसे हमारी है वैसे ही देश की भी होती है. Okay, as we have income, so nation too has the income. Okay, so how national income is gained is very important topic, because if you don't understand it, you can never understand what kind of business cycles are being run in the nation, what kind of business activities are being conducted, and how they can be categorized, how they leave impact on us by creating employment, okay, by giving us job, by giving us facilities, uplifting our life standard, okay, and seeking overall development. हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर नेशनल इनकम नहीं समझते तो. ओके, तर जाऊया समोर. National income and ways of income generation.
So first we must understand the very basic of it, that is concept of national income. Okay, we are going through the definition. Okay, because this definition will automatically reveal what kind of things are projected there to focus. Okay, means you have to lay emphasis on particular jargons or terms here, which will empower you enough to understand economy by yourself whenever you read economics. Okay, so all through the newspaper, magazines, and any text that you are reading pertaining to national income or Indian economy, these things will be reflected or resonated out of them. Okay, so meaning, what is the meaning of national income? Okay, so national income refers to the total. First, I will make the segments of the total value. Value means a monetary value. Monetary value का मतलब है पैसों में. ओके, पैसे वाली वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू. ओके, मॉनेटरी वैल्यू of all final goods and services. Final goods and services. This is second segment. Okay, then produced by whom? Residents of the country during a given period, that is usually 1 year. You can call it a fiscal year. Fiscal year means financial year. Okay, which starts with the March. Okay, 1st April and ends on 31st March of next year. That is the fiscal year, means financial year. Okay, along with the income earned from production activities. Okay, now I have not given you a thorough idea of it. Now let's talk about what is given here in the definition. Okay, यानुसार तर राष्ट्रीय उत्पन्न, ज्याला आपण राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणतो आपण, ठीक आहे, राष्ट्रीय उत्पन्न. ओके, उत्पादन नाही म्हणलं, उत्पन्नाचा अर्थ होते इन्कम. राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे एका वित्तीय वर्षाच्या कालावधीत, एक जो काही गिवन पिरियड असेल, एका वित्तीय वर्षाच्या कालावधीत देशातील किंवा देशाच्या नागरिकांनी निर्माण केलेले किंवा कमावलेले जे उत्पन्न असते त्याच्याबद्दल आपण बोलत आहे, उसके बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन कैसे ये रेसिडेंट्स करेंगे भी क्या? दे विल आइदर प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज. ओके, all economic activities can be compiled into or encompassed into two things: production of goods and services. That's it. Okay, or transactions of goods and services. That's it. So when they produce what? Goods and services, their monetary value, total monetary value, is collectively known as the national income. Okay, now I will start with some different dimension to this. I have underlined few words. Okay, here, first thing, when we call national income, national income necessarily, okay, inherits a sense of a nation. Okay, nation. So I have mentioned here the country, right? When we say country, so what makes difference between country and nation? Okay, so that's what I am very much enthused to open up the minds of candidates, so that if they should not miss any single link which empower them to understand by themselves. Okay, देश और राष्ट्र में क्या फरक है? ये तो याला मी देश म्हणतो, याला राष्ट्र म्हणतो. ओके, इथून सुरुवात करूया आपण. वगैरह 4 लाइन की डेफिनेशन, 3.5 लाइन की डेफिनेशन, इतने में समझ में नहीं आएगी, इसको डिटेल में जाना पड़ेगा. ओके, डू यू नो इट? यस साक्षी, कंट्री मीन्स क्या और नेशन मीन्स क्या है ना? मजेदार बात है. What do you mean by country? So country is actually the area in terms of
geographical area fortified by boundaries is actually a country. Okay, yes, people may live over there, but this fortified geographical area, when identified with its citizens, okay, then that country is known as a nation. Okay, like, understand, when you see a map of India, it is a country because it indicates only area. Okay, but when we say India as a nation, it is no more a geographical entity. It turns into we the people. Okay, means this territory plus people of India is the nation. Okay, yes, understand. So this is very, very important. So only physical entity or geographical area is known as country. Okay, but when it is accounted, it is, you know, consanguined with people, it becomes the nation. So we constitute the nation. So when we call national income, it inherently considers people. Okay, it is not only geographically rate, it inherently considers people. ये कंसेप्ट हमें वहां पर काम में आएगी जब हम जीडीपी और जीएनपी सीखेंगे. ओके, यस, वो कल के लेक्चर में समझ में आएगा आपको, लेकिन यही कंसेप्ट वहां पर काम में आएगी. ओके, सो कंट्री एंड नेशन हैज डिफरेंस and most of the people do not know this difference. So when I mention residents of the country, here the residents of the country includes two things. Okay, geographical area plus people means it has become automatically national. Okay, understand? So now if you say all the people living in India, they are producing something. Okay, what they are producing, either goods or services or both. Okay, and we will calculate their monetary value पैसों की value. Okay, अभी हमको ये जानना है की भारतातीलच लोक काय फक्त, है ना, एखादा व्यक्ती भारतातून दुसऱ्या देशात जाऊन कमावत असेल, will it become the part of national income? Yes, if he is Indian national, Indian citizen, okay, still retaining the citizenship of India, and is working on the foreign land, is still carrying the flag of India. So whatever he will earn over there, he will return that income to the nation. Understand? So that also accounts to the national income. So all the people living in India plus all the Indians earning on the foreign land are part of national income. Okay, got this point? तर भारतात कमावणारे, भारताच्या बाहेर कमावणारे भारतीय लोक, ओके, यांचे उत्पन्न सुद्धा राष्ट्रीय उत्पन्नाचा भाग होते, लक्षात ठेवायचं. ओके, गॉट दिस? यहां तक ठीक है? यस, मैंने बोला ना. सो व्हाट दिस पीपल विल डू ना, रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, what will they do? They will either produce goods or services. So when you think about, you know, aggregating all the income together, you have to understand what kind of goods and services are created. Okay, yes, so national income refers to what? How would you calculate? You will talk about the total value of all but only final goods and services produced by residents of the country in India or in abroad. Okay, understand? During a given year. So all but what? But only final goods and services. When we say final, I am not talking about those which are later processed, okay, or which are intermediate products. For example, okay, means I am not talking about primary goods. Okay, I am not talking about intermediate goods, okay, or I am not talking about any kind of, I'm not talking about
any kind of resell goods. Only final, when we call final goods and services, means which are ready to consume, which are produced once. Okay, अभी उसको तैयार कर दिया गया, कंज्यूमेबल बन गया, अभी उसको कंज्यूम कर सकते, उपयोग कर सकते आपकी जरूरत पूरी करने के लिए. That product is final product. Okay, understand? So what you need to impress into your notes, that final goods means those goods which are meant to be ready for consumption. They are consumable. After its consumption, any of your need will be satisfied. Okay, got it? That's very important. Okay. अब मैं बोल रहा हूं, देखो भाई, एक किसान ने गेहूं उगाया, गहू उगवलं त्याने 6 महिने मेहनत केली, वर्षभर त्याने शेतीत कष्ट केला आणि त्यानंतर त्यांनी गहू उगवलं. ओके, हा, तो गहू जर का डायरेक्ट कंज्यूम केला जात असेल, देन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, है ना? मैं किसान हूं, मैंने 100 क्विंटल गेहूं बना लिया, लेकिन मैंने उसको कंजम्पशन के लिए यूज नहीं किया, मैंने उसको बेकरी वाले को बेच दिया, हल्दीराम ने उसको खरीद लिया, हल्दीराम को ब्रेड बनाना है उसका, हल्दीराम ने पूरा 100 क्विंटल गेहूं खरीद लिया मुझसे, तो मुझे जो इनकम हुई, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट डायरेक्टली into national income, because now it will be processed. Okay, that gehu will be processed and it will turn into breads and it will fetch 4 times more price than the gehu. Okay, its value will increase because it has gone through the processing. You cannot directly eat the gehu, but you can consume the breads. So the total value of final goods, so final goods means total value of breads will be calculated or will be accounted into national income. Okay, but farmers, that income will not be counted because it will be double counting of that income. क्योंकि किसान को तो उसका पैसा मिल गया, लेकिन वो पैसा ब्रेड वाले ने दिया, वो ब्रेड वाला उसको फ्री में थोड़ी छोड़ रहा है, ब्रेड जो बना रहा है हल्दीराम, वो जो गेहूं लेने के लिए पैसा लगा था वो भी दाम उसमें जोड़ेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग का जोड़ेगा, उसको मुनाफा जोड़ेगा, तो टैक्स जोड़ेगा और उसी ब्रेड की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, तो वो डबल अकाउंटिंग हो जाएगा. इसलिए सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किया जाता है, कंसिडर किया जाता है. ओके, समझ लो, दैट्स वेरी सिंपल. ये फाइनल का एक मतलब हुआ. सो प्राइमरी गुड्स आर नॉट कंसिडर्ड हियर. Intermediate goods are very important. Okay, intermediate, because they fuel the process of something, producing something. अभी intermediate goods का मतलब क्या हो गया, क्या समझ में आ गया? Intermediate goods, okay, मध्यम स्तराच्या वस्तू व सेवा म्हणजे कशा? For example, let me tell you. Okay, if suppose we will take the example of tire maker. Okay, JK Tires. Okay, let's talk about JK Tires. So JK Tire is a big company. It produces the tires. Okay, yes, tires are used for making wheels of 2-wheelers, 4-wheelers. Okay, whatever it is. So now you are JK Tire owner. Okay, consider it. And I am the Tata Motors. I want tires to construct or to build up the car. Okay, so if I have purchased 1,000 tires from you JK Tire, okay, and used them into building up cars, then the value of tires are included into the price of the cars. So whatever you have sold me, 1,000 tires will not be accounted into the national income separately, because they are now being accounted into cars. Understand? Okay, so intermediate goods are not the part of national income.
Okay, yes, but it is being accounted, but in terms of final goods. Okay, फाइनल गुड्स में उसमें क्योंकि वो कंज्यूम हो रहा है तो कार में उसकी प्राइस ऐड हो गई. ओके, सेपरेटली टायर की ऐड करनी है. नो डबल अकाउंटिंग, अंडरस्टैंड, नो डबल काउंटिंग इज अलाउड हियर. लेकिन मैं कह रहा हूं कि नाउ आई एम नॉट टाटा मोटर्स. ओके, आई ओन ए कार ओनली and you are the JK tires. Okay, if I have to change couple of tires of my car, and if I reach to your outlet and then buy 2 tires, okay, a pair of tire, and use them, then it is final consumption. Now the same tire which we term as intermediate goods, okay, now it has become the final goods, consumable goods. Understand? तो सेम चीज कंज्यूमेबल बन गई क्योंकि मैं उसको कंज्यूम कर रहा हूं. हाँ, जब जहां कंजम्पशन के लिए गई है वो फाइनल गुड्स हो गई, बट सेम टायर जब कार बनने में यूज हो रहे थे तब वो इंटरमीडिएट गुड था. ओके, समझ गए? अब टायर बनाने के लिए जो लैटेक्स और रबर लगता है वो कंपनी ने जेके टायर आपको जो मटेरियल बेचा है, तुम्हाला जे विकला आहे ते इंटरमीडिएट गुड झालं. नाउ यू प्रोड्यूस टायर्स, that is final goods and services. Okay, so the nature of it can change. So no intermediate goods are counted into national income. Okay, this is second thing. When we have to define final goods and services, we must understand these aspects. Okay, now third thing, I mentioned resell goods. Okay, resell goods. मैं बोला कि देखो भाई ये फ्लैट है, मैंने फ्लैट खरीद लिया है. ओके, ये फ्लैट का नया बना फ्लैट खरीद लिया. जब फ्लैट खरीदा मैंने इसकी कीमत जो है बिल्डर को दे दी है. ओके, इसके ऊपर टैक्सेस भरे, सब कुछ भर गया, तो ये चीज हो गई. ठीक है, सो दिस इज फाइनल कंजम्पशन. फाइनल कंजम्पशन हो गया. तो इस साल के इनकम में, देश के इनकम में, मतलब वो जो रेसिडेंट ऑफ द कंट्री जिसको बोल रहे हैं हम, तो वो भी रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हुआ ना, जो बिल्डर है उसके इनकम में जुड़ गया. बट नाउ सडनली आई हैव मेड अप माय माइंड to shift into 3 BHK. Okay, and I will make arrangements of money by selling this flat. Okay, so मैं करूँगा भाई ये छोड़ देता हूँ, ये फ्लैट में बंद कर दूँ, इसको बेच देता हूँ. So next year when I'm selling it, its price won't be counted again because this is the resale. Okay, understand? It cannot be transacted it cannot be counted in every year's income. Suppose every owner resells it every year, it is once produced, it is not being produced again, तो रीसेल आएगा ही नहीं उसमें. हाँ, उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी है, ओके, या फिर उसके ऊपर अगर मैंने कोई मुनाफा कमाया है तो वो मुनाफा मेरे इनकम में जुड़ेगा, वो इनकम का पार्ट टैक्सेबल होगा, उतना ही होगा, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको फिर से काउंट नहीं किया जाएगा. ओके, रीसेल समझ में आ गया? रीसेल, व्हाट इज रीसेल? ओके, सो प्राइमरी, intermediate and resales will not be considered as the part of national income. So all final goods and services, okay, which are consumable, freshly produced. Okay, yes. Now when we say all final goods and services, we may be confused with such items in goods and services which are not marketed yet. अभी तक मार्केट में आई नहीं है. Okay, you are the JK tires, as I mentioned. Okay, so you produced 2000 tires, but you brought only 1000 tires in the market. Okay, thousands are not in the market. You did not bring them into the market. They are hidden in your godowns, okay, in your factory. They are still in the factory. They are not out of the gate of the factory. Okay, understand? Out of the gate of the factory, market begins. Okay, that's why it is released from the factory.
Factory means where factors of production are producing the goods and services. So the 1,000 tires are still in the factory, they are not marketed yet, so they will not become the part of national income. Okay, it is that precise. It is not exclusively given in the books. That's why we have to understand it, because otherwise the concept will go very vague and sometimes wrong into interpretation. Okay, you understand it? Are you clear of this? Okay, so when I said national means all the people living in this country and Indian citizens living abroad and earning there, okay, become the part of national income. Second thing, we are talking about all final goods and services produced, because these are the things only can be produced and will be marketed. Okay, understand? So when we say final goods and services, the primary, intermediate and resale are not considered. Okay, and on the top of that, I mentioned one more thing, that only marketed goods and services will be considered as part of national income. Okay, got this point? समझ में आ गया? ओके, तर एका वर्षाच्या कालावधीत ओके देशाच्या नागरिकांनी निर्माण केलेल्या सर्व अंतिम वस्तू व सेवांचे ओके टोटल व्हॅल्यू, अंतिम मूल्य, ओके एकूण मूल्य जे असेल त्याला नॅशनल इन्कम म्हणतात, राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणतात. ओके, कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग बाय टेक्स्टिंग, मेसेज करा, कॉमेंट करा, करत राहा. ओके, yes, national income refers to the total value of all final goods and services produced by residents of country during a given year, that is usually a fiscal year, 1 year. Okay, along with income earned from प्रोडक्शन एक्टिविटीज. प्रोडक्शन एक्टिविटी, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में ये जस्ट आ जाएगा, उससे इनकम होता रहेगा. प्रोडक्शन एक्टिविटी में बहुत सारे फैक्टर्स लगे होते हैं. प्रोडक्शन एक्टिविटी जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, ओके, कैपिटल, स्किल्स हो गए, एंटरप्रेन्योर स्किल्स हो गए, ये सब कुछ आपको कोई ना कोई अर्न करा के देती है. सो इन वेरियस फॉर्म्स यू हैव अर्न द इनकम. ओके, सो दैट्स सिंपल phenomenon. Okay, I think, is there any doubt? If there is any doubt, you can ask me. Okay, I have left no reason for emergence of any doubt in this definition, because I have tried to decode every single aspect which is not exclusively given in the textbooks. Yes, okay, good. Yes, so this is the concept. Now in simple words, you can again emphasize on something else. So national income is actually the aggregate income earned by all factors of production. Now I used all factors of production, and definitely people will earn, but through what? Okay, there must be a medium. So what are those media which actually help people to earn the income? So those are factors of production. Okay, तर कोणत्या माध्यमातून लोक कमाई करतील? त्यासाठी उत्पादनाचे घटक पाहिजे. उत्पादनाचे घटक, उत्पादनाचे घटक, yes, factors of production. Okay, this ghatak means the factor. Okay, okay, it may be land, labor, capital and entrepreneurship skills. Okay, understand? These are the 4 factors of production which actually earn the national income. Utpadanaचे घटक. Without land, okay, where will you establish the factory where market will come into existence? No. Without labor, there will be no operating mechanism for the production. Okay, and labor use their skills, manual labor, or their any kind of expertise into creating capital. Capital may be kind of like machine. Okay, capital may be kind of infrastructure. Capital is very important, without which you cannot produce anything, because where from you will bring the raw material, where from you will bring the machineries, where from you will bring the technology. Okay, so you need capital for it. So it is all sort of capital. And then entrepreneurship skills.
जो भी कर रहा है, somebody is there to own it, okay, and he should be skillful into running that business, okay, and fetching the profit out of that business. So whether it is industrialization, means manufacturing something, or whether it is a business transaction, okay, whatever, entrepreneurship is very important, okay. तो इन चारों फैक्टर्स से एक साल के अंदर जितना भी पैसा अर्न हुआ है वो हो गया नेशनल इनकम, ओके। जैसे मैं कुछ भी कह लूं, लैंड में जैसे मैंने कहा कि देखो रिलायंस फ्रेश लगाए है अभी हमारे घर के पास में इधर, तो क्या हो गया, रिलायंस फ्रेश ने जिससे जमीन ली होंगी उसको पैसा दिया, ओके। जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिल रही है, उनका इनकम अकाउंट, जितना भी खर्च कर्ज बैंक से लिया होगा रिलायंस ने उसके लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ओके। मशीनें लाई है उनको उन्होंने पेमेंट किया होगा, और रिलायंस के जो मालिक है उनको जो प्रॉफिट अर्न होगा उनका इनकम वो भी नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, ओके, गॉट दिस पॉइंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 4 factors are very important factors, okay, because they result into production of either goods or services, whatever it is, okay। तो दो ही चीज दुनिया में इंसानों के लिए, दो ही चीजों की जरूरत है, या तो उसको वस्तु से कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा या किसी सर्विस से मिलेगा। तो दो ही चीज बिकती है, या तो वस्तु बिकेगी या फिर सर्विस बिकेगी, ओके, गॉट दिस। तो इसी का वैल्यू होगा, इसी का प्रोडक्शन होगा, इसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसी का कंजम्पशन होगा। तो सारी एक्टिविटी जो है गुड्स और सर्विसेज के पीछे बढ़ी, इसलिए सारा इनडायरेक्ट टैक्स समेट के गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जीएसटी बना दिया है, ओके। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप क्या निर्माण कर रहे हैं, ये दे आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, ओके, दैट्स फाइनल कॉन्सेप्ट। यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ओके। दो चीजों के लिए दुनिया पूरी घूम गई है, वॉर चल रहे हैं, है ना, एक दूसरे के खिलाफ झगड़ रहे हैं लोग, 7 समुद्र पार करके कहीं चले जाते हैं छोड़ के अपना घर, किस लिए, सिर्फ दो ही चीज मिलाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, कितनी मजेदार बात है, okay। If you attach philosophy to the Indian economy, so to the economics, then you will understand, man, what the hell is this, only goods and services are actually after us, we are after them, and we are consistently falling into a vicious cycle of earning something, earning this and that, okay, because everything will be calculated what kind of needs you are creating and whether you are ready to satisfy your own needs. So for that you need to work hard, earn lot, okay, and do blah 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 many things। तो बहुत सारी चीजें सिर्फ उसी के लिए चल रही है, okay। yes, okay, got this point। अभी it serves as an important indicator, okay, it serves as an important indicator नेशनल इनकम अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ गया कि वो एक निर्देशांक है, इंडिकेटर है, क्या सूचित करता है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है देश का, डेवलपमेंट कहाँ जा रहा है, विकास कहाँ है, विकास खोज रहे हैं। देखो मोदी जी ने कहा था विकास आएगा, तो सब लोग ढूंढ रहे हैं विकास कहाँ है, विकास भैया को मिलने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं विकास तो आ चुका है, हम 6 to 7% के रेट से जीडीपी ग्रो कर रहे हैं, मतलब हम विकसित हो रहे हैं, ओके, विकास आ रहा है, विकास मतलब डेवलपमेंट, ओके, क्वालिटी इनटू इकोनॉमी इज being built up, okay। So that building of quality into economy is assessed through economic performances of various sectors and overall development। तो वो किसी समझेगा नेशनल इन्कम बढ़ा की नाही बढ़ा। जसे आपके बारे में भी कहतो स्वतःबद्दलही असंच बोलू शकतो आपण की मागच्या वर्षी तुम्ही जेवढे कमावले त्यापेक्षा जास्त या वर्षी कमावत असेल तर तुमच्याकडे विकास झाला, कारण तुम्ही नवीन काहीतरी करू शकता, है ना। अदरवाइज वही रिपीटेड लाइफ चल रही है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए सबकी सैलरी बढ़ना जरूरी होती है, सैलरी बढ़ते रहती है, हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होता है, बड़ा इंक्रीमेंट जो है फिर वो पे कमीशन लाकर लगाते हैं और पगार बढ़ती जाती है ना। इन 1980s the salary structure was completely different। you ask your parents or you ask your dad how much he used to get or
his seniors, if you know, used to get. ठीक है, मैं खुद जानता हूँ कि मेरे दोस्त लोग जब टीचर लगे थे तो लाइक इन 19 in the end of 1990s means end of that millennium, तो उस समय में लाइक 2000 के आसपास समझ लो, उस समय 3,500 रुपए को सैलरी हुआ करती थी टीचर की. ओके, आप कितनी है पूछो लो, आपको पता चल जाएगा. यू आस्क योर डैड हाउ मच actually he earns now, and when he was appointed as teacher, how much he used to get, then you'll understand it. Okay, so this is what we calculate. So national income has to grow, okay, in terms of getting or gaining development and quality into the economy, which reflects the continuous progress of various sectors contributing into the national income, and which leaves greater impact on the lives of the people. Okay, yes. तो इस तरह से हमने ये समझ लिया. अभी ये कभी नहीं भूलना है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. अब मैं क्यों कह रहा था वाई. ओके, आप सोच लो कि देयर आर ओनली 4 ways to get the income, to earn the income. There are only 4 ways. How many can you imagine? Come on. Okay, type there, answer me. How many ways can be there? Okay, how many ways can be there to earn income? खुद के लिए बोलो, देश के लिए, सभी के लिए एक जैसी बात आहे. सगळ्यांसाठी सारखीच गोष्ट आहे. किती माध्यमातून उत्पन्न कमावता येऊ शकते? That's quite challenging, but it's very easy. Okay, come on, type it. How many ways are there, or how many ways can be there to earn the income? है ना? आंसर तो वही है. या तो आप कहेंगे आप नौकरी कर रहे हैं तो यू विल गेट सैलरी. ओके, यस, मल्टीपल वेज लाइक बिजनेस, टीचिंग. अरे नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट you know economic activity. I'm talking about what kind of incomes you can generate. Okay, types of income. So if you're going for any kind of service, any kind of job, so you will earn either salary or remuneration. Okay, remuneration for your labor. Okay, ये एक रास्ता हो गया. दूसरा, okay, if you are running a business or industry, you can get profit. Profit is another way. Then if you have any kind of property, okay, that means land or whatever, you'll get rent. Okay, yes, rent. Or there is another way. If you lend money to someone, you can get interest over it. So fourth one is interest. इन 4 प्रकार के अलावा आप किसी भी फॉर्म में कमाई नहीं कर सकते. ये 4 ही है. लैंड इन्वेस्टमेंट में उससे भी प्रॉफिट ही आएगा. आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट इज फॉर प्रॉफिट. इट इज नॉट लैंड इन्वेस्टमेंट. एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट will fetch you profit. If you are lending the money to others, borrowers will return the money as well as interest on it. Okay, if you're running a business, you will have the profit. Okay, if you're having a job or putting labor somewhere, you'll get remuneration or salary. Okay, there are only 4 types of income you can earn, and there is nothing beyond it. इसके अलावा कुछ भी नहीं है. Okay, इसलिए हमने broadly categorize किया कि what are those factors which actually constitute our national income. So land, labor, capital, and entrepreneurship. Okay,
Yes, that's why these are the 4 important factors of production. Okay, land, okay, it earns the rent, labor, salary, capital, interest, entrepreneurship, profit. Okay, so these are the things that you can earn, and that's why putting greater emphasis on land, labor, capital, and entrepreneurship as a factor of production, okay, you can understand many things. Do you understand my conspiracy to focus on these 4 words, terming them as factors of production? Okay, because who owns the factors of production controls the economy. If government controls the factors of production, then it becomes communist or socialist economy. It is government economy, public economy, and it is almost closed economy. If a certain person or group of persons which are known as capitalists, if they control the factors of production, it becomes capitalist economy. Okay, very rightist economy. Understand? Like America. So always think about what are those, because these factors of production are actually the factors which generate the income. Okay, final राउंड ऑफ। समझ में आ गया मैंने इतना सारा क्यों उसके ऊपर एम्फेसिस किया, वाई, मेरा कहने का मतलब क्या था। ओके ठीक है, कैसे क्या होता है, वाई इज नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट, ये पहले समझ लो, ये बाद में समझेंगे। ठीक है, पहले ये समझ लो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये बताना चाह रहा था मैं आपको भी। ओके, ये बताऊं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो बेसिक आइडिया क्या है इसकी, ये मैंने डेवलप किया आपके लिए। ठीक है, ये डेवलप किया, क्या है, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब होगा नेशनल इनकम कैसे जनरेट होती है, वो जनरेट होती है कैसे, देखो क्यों होती है, ये हमारा रिलेशन क्या होता है जनरली फर्म्स के बीच में और हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मीन्स एनी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन who commonly share the income, expenditure and consumption decisions. Understand? Decisions share करते हैं। लाइक समझ में आ गया कि नहीं आप हाउस होल्ड किसको बोलेंगे। ठीक है, अगर आपने समझो कि आप अकेली होती, आपने अप्रोच किया तो मुझे और क्लास लगा लिया। ओके, सो ये क्या हो गया, आप भी एक हाउस होल्ड है, आप अकेले व्यक्ति भी हो सकते हैं हाउस होल्ड, बिकॉज यू आर मेकिंग डिसीजन ऑफ कंजम्पशन ऑफ सर्विस। ओके, और मैं कहता हूं कि चलो कभी कभी होता है कि कोई अकेला डिसीजन नहीं ले पाया, लाइक योर डैड, ओके, और द संदेश ब्रदर एंड यू or your parents, okay, together you all people have made the decision to consume this tuition service. Okay, so household का मतलब क्या हो गया, वो घरेलू एंटिटी, इकोनॉमिक यूनिट बोलेंगे। इट इज अ बेसिक इकोनॉमिक यूनिट which consisted of a person or a group of persons who share income और एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन डिसीजंस। ओके, ये हो गया हाउस होल्ड। तो आप मैं सब हाउस होल्ड, अभी हमारे दोनों के रिलेशन के बारे में बोल रहा हूँ। आप हाउस होल्ड है, मैं फर्म हूँ। ओके, मैं फर्म हूँ, फर्म का मतलब मैं एक कोई उद्योग चला रहा हूँ, मैं बिजनेस। ओके, फर्म हूँ। सो व्हाट हाउस होल्ड्स प्रोवाइड, हाउस होल्ड प्रोवाइड टू द फर्म व्हाट, आइदर लेबर और लैंड और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ओके, ये लोगों से ही आता है, ये लोग ही प्रोवाइड करते हैं। ओके, लोग ही प्रोवाइड करते हैं। अब सिद्धार्थ आईएएस एकेडमी फर्म है। ओके, आप इसमें से कुछ भी देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मुझे कैपिटल दीजिए, ठीक है, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। आप दुकानदार से गुड्स खरीदते हैं, तो ये एक रिलेशनशिप होता है। ओके, रिलेशनशिप होता है। तो हाउस होल्ड्स प्रोवाइड लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, ओके, टू द फर्म, एंड फर्म प्रोवाइड इन टर्न, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज। एंड हाउ दिस इज मेड, ये कैसे होता है, इस तरह से जो अभी मैंने बोला। ओके, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां से आ रहा है, हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो लैंड के बदले इन रिटर्न क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा।
लेबर के बदले क्या मिलेगा? वेजेस या सैलरीज मिलेगा। कैपिटल के बदले क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, यस। आप बताइए, योर डैड वर्किंग एज टीचर gets what? Salary or wages. Okay, yes. So where my office is, okay, office, I have rented the property. Okay, that's why my landlord gets rent. Tata Group becoming any kind of, like Tata Motors, they earn the profit. Okay, banks like SBI lending people the money, they will get interest. So everything can be, you know, culminated into this kind of income types. ठीक है, ये हो गया, इसलिए हमको ये जानना जरूरी था। अभी हम बोलेंगे ये चीज हमारे लिए बहुत काम की होंगे। आप जब भी इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इनकम की बात कहीं पर आती है, नेशनल इनकम से ही किसी का जजमेंट किया जाता है, कोई भी कंट्री का जजमेंट किया जाता है। तो ते जजमेंट करण्यासाठी नॅशनल इन्कमच का घेतला जातो, तेच काय इम्पॉर्टंट आहे? व्हाय नॅशनल इन्कम इज सो मच इम्पॉर्टंट? बिकॉज इट हेल्प्स us to measure the size of economy. Okay, now India, which has just surpassed the benchmark of 4 trillion economy, India is now ranking 6th economy in the world, and in next 20 years India will be the 3rd largest economy in the world. Okay, that means I'm talking about size of economy. It bears respect. It bears turbulence into the economy, strength of economy, capacity to produce, capacity to provide and create the wealth. So it is what is the size of economy. Okay, yes. Second, it makes assessment of economic growth. It helps us to assess what? Economic growth. हम सोचते भाई पिछले साल की तुलना में इस साल कितना बड़ा इनकम है ना, नेशनल इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई है? Economic growth was 7.3%. Okay, for 25-26, 2025-2026, this is a financial year, and for financial year, what we understood when the reports came, data came on the 31st March, we realized, means before it came, but we then realized that the growth we achieved in last fiscal year was 7.3% to 7.4%. means good economic growth is happening. Okay, समझ गया? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है भैया, हो रही है। ओके, पिछले साल की तुलना में या पिछले एक ग्रोथ सिनेरियो की तुलना में इस बार कितना मिला। सो वेदर वी आर प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, वी कैन अंडरस्टैंड। थर्ड इंपॉर्टेंट, compare economic performance across the years. Okay, across the years means that you can take a set of years. Okay, across the, you can take into account individual years for analyzing the economic performance. But the very popular unit to measure the economic growth is decadal growth. Decadal means decade. Okay, a decade means a set of 10 years, 10 साल की तुलना में, है ना। तो अभी 20s का दशक चल रहा है, डिकेड चल रहा है। इसके पहले जो था वो 20s का नहीं था। ओके, सो अभी आने वाले इसमें 30s का शुरू हो जाएगा। तो डिकेडल ग्रोथ में 2000 से लेकर 2010 तक के, 2010 से 2020 तक के, क्योंकि जो भी ग्रोथ का सिनेरियो है उसकी तुलना में अब कैसा है, या फिर 2000 से लेकर 2001 से 2010 और 2011 से लेकर 2020 में ये 2 डिकेड में परफॉर्मेंस कैसा रहा, तुलनात्मक, कंपैरेटिव। सो यू कैन अंडरस्टैंड, कंपेयर वन कंट्री विद अनदर कंट्री। यस, you can compare India with other country or 2 different countries together based on their economic performances or in terms of national income. Okay, then formulate economic policies. Economic policies formulate करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमें गरीबी हटाने के लिए क्या करना है। ओके, हमारी नेशनल इनकम कितनी है उसके हिसाब से हम कितना कर सकते हैं। या फिर आप ये बोलेंगे कि हाँ भैया
किस तरह से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, कितनी स्कूलें खोलनी है, और हम कितने लोगों के लिए हमने हेल्थ पॉलिसीज देनी है, सिक्योरिटी देनी है ना, कितने लोगों के लिए स्टार्टअप देना है, कितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, सारी की सारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज. एंड इट एस्टिमेट्स, it help us to estimate living standard and per capita income. लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है लोगों का, और per capita income means like when total income, national income is divided by total population, okay, population, then it becomes per capita income पर हेड. देश ने जितना भी कमाए उसको अगर सारे पॉपुलेशन में बांट दिया जाए तो पर हेड कितना आएगा, दैट इज पर कैपिटा इनकम. तो पर कैपिटा इनकम बताता है कि हमारी क्षमता कितनी है लोक कल्याण करने की, ओके, टू सीक वेलफेयर फॉर द पीपल. सो दिस इज इट. Okay, you understand it? It's absolutely necessary to it. And whenever I'm just pointing out these things, you put it on the paper, okay, so that it becomes your notes, a flowy notes. तो वो आपको बहुत काम में आएंगे रिवीजन करने के लिए. एंड जब भी आइडियाज जनरेट होती है दिमाग में तो वो वहां पर लिख लिया जाता है, वो जो नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तभी आपको समझाया है ना, मैंने वो एक डेफिनेशन को कितना एक्सपांड किया हमने, है ना, नेशनल इनकम की डेफिनेशन को कितना एक्सपांड किया. ये इतना इजी नहीं होता, तो ये किताबों में दिया नहीं रहता, और आई मे नॉट रिमेम्बर इट अगेन. सो फ्लो में हो जाता है. मैं सोचता हूँ कि हाँ मुझे आपको बताना है तो कितना डेप्थ तक बताऊं ताकि आपको इजी हो जाए सब चीजें अंडरस्टैंड करना. सो दिस आइडियाज यूजुअली कम व्हेन आई एम इन फुल इंटेंशन टू टीच समथिंग. सो वहां पर लिखना, जॉट डाउन करना बहुत जरूरी होता है. वो दो चीजें कराती है, एक तो आपका फोकस बढ़ाएगी, ओके, और आपको आइडियाज भी लाएगी अलग अलग टाइप के. ठीक है, ओके. सो हाउ डिड यू फील? Now we are progressing towards the topics. National income, we have started the very first important segment of Indian economy, national income. ये हो गया. नेशनल इनकम कैसे लाई जाती है कल देखेंगे. उसके बाद जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ओके, ये सब चीजें क्या है, जो कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ओके, और देन इट विल बी डन फॉर यू. ठीक है, फिर कुछ डेफिनेशंस को लेकर नेशनल इनकम, और फिर उसके साथ कुछ डेफिनेशन जो इकोनॉमिस्ट है उनको लेकर हम और ज्यादा उसका पोस्टमार्टम करेंगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. इकोनॉमी विल बिकम वेरी मच इजी फॉर यू. ओके, ठीक है. इंडियन पॉलिटी की कुछ रिकॉर्डिंग डालूंगा मैं, ओके. इंडियन पॉलिटी की स्टार्टिंग का जो बेसिक है वो उतना भी अगर आप कर ले पहले कुछ डिस्कशन शुरू होने से पहले तो बहुत अच्छा हो जाएगा. ओके, ये एप्लीकेशन में अपने ये कोर्स के अंदर अगर आप कंटेंट में जाते हैं तो कंटेंट में तो आपको पता चलता है कि प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू सब दिया है. सो उसमें जो मेंस में राज्य सेवा मेंस जो फोल्डर है उसको खोलेंगे तो पेपर वाइज मैंने उसमें फोल्डर बनाया है ना. अब वो क्या करना है आपको, वहां पर सिलेबस भी दिया है, ओके. वो सिलेबस को प्रिंट करा लीजिए और उस सिलेबस को रट डालना है. पूरा सिलेबस जो दिया है मेंस का पूरा रट लो, पूरा का पूरा रट लो उसको. मैं कभी भी पूछूं कि हाँ चलो पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या आएगा साक्षी, तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें. ठीक है, हाँ, तो उसको रट लीजिए पहले, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है. ओके, गुड. ठीक है, अभी मुझे लगता है कि आपको मैं मैन्युअली सेंड करना पड़ेगा ये टेस्ट, क्योंकि इस पे अपलोड नहीं हो रहा, मेरे पास में वो आ नहीं पा रहा है. मैं मैडम के मोबाइल से आपको भेज दूंगा. ठीक है, ओके, गुड. रीड इट. और इसके जो एनसीईआरटी वगैरह होंगे आपके पास, स्कूल बुक होंगे, उससे भी ये चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, कुछ चीज समझ में आ जाएगी आपको. राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच.